So today we are going to start with William James. तो विलियम जेम्स रिप्रेजेंट करते हैं वो ट्रांजिशन जो कि यूरोपियन साइकोलॉजी से, ऑब्वियसली यूरोपियन साइकोलॉजी जो वोंट की है या टिचनर की है, उससे एक जो चेंज आया यूएस साइकोलॉजी की तरफ, राइट. सो इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन दैट वाज देयर बिटवीन द यूरोपियन एंड then the US psychology. Now James believed in the idea of pragmatism, a belief that if an idea works, it should be useful. वो pragmatism पे belief रखते थे और pragmatism का simple meaning is that if an idea works, then it is useful. So according to him, both philosophical and scientific approach must be used to study human behavior. So वो मानते थे कि फ़िलोसफिकल और साइंटिफिक अप्रोच दोनों का यूज़ किया जाना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, एज बोथ सर्व डिफरेंट पर्पस एंड वर यूजफुल इन देयर ओन राइट. इवन ऑल्टरनेटिव मेथड्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन वर एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू हिम. सो ही बिलीव दैट फिलोसफी वाले इशूज़ भी आने चाहिए साइकोलॉजी में, द साइंटिफिक अप्रोच का भी यूज़ करना चाहिए सो एज टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर. So for that purpose, he even agreed with the use of introspection as a method of research, right? Then he proposed radical empiricism. That means कि all consistently reported aspects of human experience are worthy of the study. So he believed in radical empiricism. रेडिकल एम्पेरिसिज्म में क्या है? एम्पेरिसिज्म मतलब एविडेंस बेस्ड. तो ऑल कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस आर वर्दी टू स्टडी. जब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट इज रिपोर्टिंग कंसिस्टेंटली राइट टू एनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नाउ दैट बिकम्स समथिंग दैट इज वर्दी फॉर स्टडी इन साइकोलॉजी. James was profoundly and anti-analytical against the reductionist approach of structuralist, as it may lead to psychologist fallacy. A psychologist tends to read into his experience what he thinks his theory requires. तो ये psychologist fallacy जैसी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए. He was against reductionist approach जो कि जैसे structuralist यूज़ करते थे. So he was anti-reductionist, right? And he was against psychologist fallacy कि साइकोलॉजिस्ट अगर अपने एक्सपीरियंसेस को रीड कर रहा है what he thinks his theory requires, so that is a problem according to James. So his approach was reductionist. He was against reductionist approach of structuralist. He believed to break consciousness into elements was unwanted, as it is a continuous flow of thoughts, streams of consciousness. So इनके अकॉर्डिंग कॉन्शियसनेस को अगर आप टुकड़ों में बांट रहे हैं, it is unwanted, it is bad. Why? Because it's a continuous flow of thought. It's like a stream of consciousness. It's a stream of consciousness. Consciousness is not like a chain or a train, but it's like more like a stream or a river as it flows. So mental life at any time is a unity, a total experience flowing as a stream, right? So एक चेन ट्रेन की तरह नहीं है, ये स्ट्रीम की तरह है या एक रिवर की तरह है. If we talk about mental life, it is at time, it is a unity, a total experience that is flowing as a stream. So stream of consciousness या characteristics की बात करें तो James opposed those who were busy searching for the elements of thought. So he was against this viewpoint कि हम elements of thought की search जो है वो sterile है, unfruitful है according to him. So according to him, consciousness is personal, as I know कि it reflects the experience of an individual, है ना. We know that consciousness हमारी सबकी अलग अलग होती है, personal होती है और वो individual के experiences को reflect करती है. Consciousness is continuous, it cannot be divided up for analysis. कॉन्शियसनेस एकदम कॉन्टीन्यूटी में चलती है. इट्स अ स्ट्रीम, राइट. इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू बिट्स एंड पीसेस लाइक फॉर एनालिसिस. इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. कॉन्शियसनेस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती है. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज अ स्टेडी स्ट्रीम फ्रॉम, वी डू कंसिडर इट एज अ स्टेडी स्ट्रीम फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बट we never have exactly the same idea twice, because the stream of consciousness that provides the context for an idea is ever changing. So we can even say
that one can never have exactly the same idea twice, because वो जो stream of consciousness है, it provides the context for the idea, and the context for the idea is ever changing, right? So the thought can never be the same, the idea cannot be same. Consciousness is selective. Some of the many events entering our consciousness are selected for further consideration and others are inhibited. Consciousness selective क्यों है? कुछ बहुत सारे जो events enter कर रहे हैं हमारे consciousness में, they are selected for further consideration and others are inhibited. अब consciousness जो है वो selective होती है. Some of the many events that enter into your consciousness are selected for further consideration and others. तो आप देखें, every thought that you attend to, you don't take it forward. There are some that stick with you and then they enter your consciousness, they get selected and then they are considered for further, right? बाकी सारे thoughts inhibit हो जाते हैं. Consciousness is functional. It has a purpose to aid, और वो purpose है to aid the individual in adapting to the environment. ये main purpose है consciousness. Habits and instincts. Now James believed that instinctive behavior is modifiable by experience, और नए नए instinct like pattern behavior के develop होते रहते हैं within the lifetime of an organism. And James called this learned patterns of behavior habits. Further on, he gave a neurophysiological explanation of habit formation. He said that repetition causes the same neural pathways within the brain to become more entrenched and making it easier for the energy to pass through those pathways. So that's what happens कि repetition होती है neural pathways की within the brain, and then those pathways becomes more entrenched and thus it makes easier for the energy to pass through those pathways. According to James, habits are functional because they simplify the movements required to achieve a result. है ना, simplify करते हैं हमारे movements को जो हमें कोई एक result तक पहुंचाते हैं. They increase the accuracy of the behavior, they reduce your fatigue and they diminish the needs to consciously attend to performed actions, right? इवन हमें उस एक्शन पे उतना एफर्ट, उतनी एनर्जी नहीं लगानी होती, कॉन्शियसली अटेंड नहीं करना होता उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए. फर्दर ऑन ही क्लेम दैट कॉन्शियसनेस, वही कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव होती है कॉन्शियसनेस, फ्रिंज स्टेट्स है, एंड इट्स वेरी सब्सटेंटिव, राइट, द कंटेंट, राइट. इट इज़ नॉट स्टैटिक, इट कैन नॉट बी इंट्रोस्पेक्टिव, क्योंकि वो खड़ी नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं उसको, ये कॉन्टीन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह है. सो बेटर टू स्टडी वाइल इट इज़ इन यूज. इट्स बेटर टू स्टडी वाइल इट इज़ बीइंग यूज्ड. So functional aspect is very important when you talk about consciousness. Next, so he defined psychology as a science of mental life, and he kind of enlarged the scope of psychology. He emphasized on physiological psychology that stressed brain functions in accounting for mental experience or consciousness. सो उन्होंने एम्फसाइज़ किया फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी पे, ब्रेन के फंक्शंस पे, कैसे मेंटल एक्सपीरियंस को काउंट करते हैं ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस या कॉन्शियसनेस को. सेंसेशंस, ऑन सेंसेशंस ही गिव हिज वर्क, राइट. इट इज़ द फर्स्ट फेज इन बायोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, दैट एस्पेक्ट ऑफ न्यूरल प्रोसेस दैट इज ट्रिगर्ड फर्स्ट व्हेन अ स्टिमुलस इनिशिएट्स अ न्यूरल इम्पल्स इन द रिसेप्टर सेल्स. सो आपके रिसेप्टर सेल्स में कोई एक स्टिमुलस आता है, उससे आपकी न्यूरल इम्पल्स जो है एक्टिवेट होती है. इट गेट्स ट्रिगर्ड, इट रीचेज योर योर ब्रेन एरिया. दैट इज़ व्हाट इज सेंसेशन. ईच सेंस ऑर्गन was selective and responds only to a particular variety of stimulation. हर सेंस ऑर्गन सेलेक्टिव है, ऑडिटरी है, तो वो ऑडिशन से रिलेटेड चीज़ें ही को प्रोसेस कर पाएगा, राइट. And it responds to a particular variety of stimulation within a certain. Then comes his work on perception and elaboration of sensory processes within the central nervous system. तो perception क्या होता है? Perception is elaboration of sensory processes within the central nervous system. Central nervous system में
कैसे elaborated है sensory perception is elaboration of sensory processes within the central nervous system, elaboration of sensory processes within the central nervous system. ठीक है, जब हमारे सेंसरी प्रोसेसेस ब्रेन तक जो पहुंच गए, वो सेंसेशन तक का काम हो चुका है, देन वो सेंसरी प्रोसेसेस विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाउ दे गेट इलैबोरेटेड इज द नेक्स्ट थिंग, राइट. इलैबोरेशन ऑफ सेंसरी प्रोसेसेस विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज परसेप्शन. It involves selection, addition, subtraction, adaptation, interpretation, both from the psychological and biological determinants. तो perception में आप selection आते हैं, you select some kind of stimuli, then उसमें addition होता है, subtraction होता है, adaptation होता है, interpretation किया जाता है. Psychological and biological दोनों ही determinants perception में involved है. Perception is not volitional act. It is influenced by the sum of subject's conscious experience, his past, his present, right? It's not something that's based on will. Perception is not a volitional act. ये एक sum है subject के conscious experience का, उसके past, उसका present, everything. A stimulus perceived by the organism might bear no resemblance at all to the real stimulus. कई बार हम देखते हैं कि एक ऐसा स्टिमुलस परसीव किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिसकी कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है रियल स्टिमुलस के साथ, सच एज इन द केस ऑफ इल्यूजन्स, राइट. देन कम्स लर्निंग. सो लर्निंग में क्या है, बेसिकली इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम. जब आपका नर्वस सिस्टम मॉडिफाई हो जाए काफ़ी अच्छे से, सच दैट अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट फैसिलिटेट्स इज रेकरेंस, और एक पर्टिकुलर एक्ट की अक्रेंस फैसिलिटेट करती है उसकी रेकरेंस को बार बार, राइट. मॉडिफिकेशन हो गई ना नर्वस सिस्टम में. रेपिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस वाज सफिशिएंट टू एंश्योर कि ये फिजियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स जो बने हैं, दे एस्टैब्लिश कनेक्शंस बिटवीन एक्सपीरियंस एंड बिटवीन न्यूरल प्रोसेसेस. रेपिटेशन सफिशिएंट है एंश्योर करने के लिए इन फिजियोलॉजिकल अल्टरेशंस को, as to establish connections between experiences and between neural processes. We talked about habit and instincts. या लास्ट में आ गए हम बिल्कुल कि हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस लाइक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, दे आर अ रिजल्ट ऑफ फर्दर एलाबोरेशन ऑफ सेंसरी प्रोसेसेस विद इन द CNS. जो ये रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ये जो मेन हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस है, ये क्या हैं, ये दे आर रिजल्ट ऑफ फर्दर, जब सेंसरी प्रोसेसेस हैं वो इलाबोरेटेड होते हैं विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन दिस हायर मेंटल प्रोसेसेस रिजल्ट, राइट. एंड दे ऑल्सो एड इन एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल, एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की टू द इन्वायरमेंट.